Wisdom Corner. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. If you are new to my channel, press the subscribe button and hit the bell icon to get latest notifications. Like the video and share it with your friends and family. Today we are starting the first chapter of Flamingo book, The Last Lesson, which is written by Alphonse Daudet. Before going into the detail of the chapter, let's discuss about the author, Alphonse Daudet. He was born in 1840 in France and died in 1897. He was a French novelist and a short story writer. Earlier, he was a school teacher, but he quit it to make a living as a journalist in Paris. Now let's move to the main characters of the story. जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का उसका नाम है फ्रांस. ही इज़ अ फ्रेंच बॉय एंड ऑल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी. फ्रांस एक लेज़ी बच्चा है बट साथ ही सेंसिटिव भी है. इसे फ्रेंच पढ़ना और फ्रेंच पढ़ाने वाला टीचर एम हेमल दोनों ही पसंद नहीं हैं. सेकेंड कैरेक्टर जो है वो है एम हेमल. ही इज़ अ स्कूल टीचर इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन और ये यहाँ 40 साल से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं. Now let's see the background of the story. ये जो स्टोरी है वो 1870-71 की फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की है, जब फ्रांस प्रूशिया से हार जाता है और तब बर्लिन से ऑर्डर आता है कि फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन में अब फ्रेंच की जगह पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. दैट मीन्स उस रीजन के लोगों की जो मदर टंग थी उसी लैंग्वेज के ना पढ़ाने के ऑर्डर्स आ गए. And that day it was the last lesson of the French teacher M. Hamel. So the villagers also came to attend his last lesson as a mark of respect for his hard work as he has been teaching there for 40 years. Now let's see the theme of the chapter. This story talks about the impact of war on the lives of people. एक वॉर के हो जाने से कैसे लोगों की लाइफ बदल जाती है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनकी लाइफ में, कैसे उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी उनसे छिन जाती है, उनकी अपनी लैंग्वेज, उनकी मदर टंग जो उनके अंदर नेचुरली है हमेशा से, कैसे वो उनसे छिन जाती है. पैट्रियटिज्म, देशभक्ति या देश प्रेम, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, अपनी भाषा की स्वतंत्रता और लव फॉर वंस मदर टंग, अपनी मदर टंग के लिए प्यार, ये सब इस स्टोरी की मेन थीम्स हैं. The story begins with a young school-going boy named France, जो कि इस स्टोरी का नरेटर भी है. फ्रांस उस दिन स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था एंड M. Hemmel, the French teacher, had announced the previous day that he would test them on the topic of participles. France did not know anything at all, so he was scared of being scolded by his teacher. इसीलिए वो सोचता है कि याद नहीं किया, लेट भी हो गए तो आज स्कूल मिस कर देते हैं, एंड टू स्पेंड द डे आउट इन द वार्म एंड ब्राइट वेदर आउटसाइड. बट समहाउ ही कंट्रोल्ड हिज टेम्पटेशंस और वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाएगा. व्हेन ही वॉक पास द टाउन हॉल ही नोटिस्ड अ ह्यूज क्राउड एट द नोटिस बोर्ड. अब व्हाट वाज देयर इन द नोटिस बोर्ड? नोटिस बोर्ड जो था वो 2.5 साल से, जब से प्रोशिया के और फ्रांस के बीच वॉर शुरू हुआ था, सिंस देन all the bad news like losing the war, occupation of Alsace and Lorraine, etc. had been communicated to the people by this notice board. France kept on walking, but at the same time he was thinking what could have been put up on the notice board now. अब क्या आ गया नोटिस बोर्ड में? जैसे ही वहाँ से निकल रहा था और ये सब सोच रहा था, तभी एक ब्लैक स्मिथ, दैट मीन्स लोहार, जो कि वो न्यूज़ पढ़ रहा था, वो फ्रांस को पीछे से आवाज़ लगाता है एंड ही सेड, डोंट गो इन सच अ हरी एज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल. फ्रांस सोचता है शायद ये लोहार उसका मजाक उड़ा रहा है बिकॉज फ्रांस अभी ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका था. Then the author presents a comparison between any normal day in the school to that particular day. On normal days, there was noise of moving desks, children repeating the lessons, and the teachers striking the tables with ruler. But that day, there was silence all around, like any Sunday morning. जैसे संडे के दिन स्कूल बंद रहता तब जैसे एकदम शांत रहता है स्कूल, वैसे ही एकदम शांत था उस दिन. France feared scolding by M. Hemmel because he was late that day, but teacher उसको कुछ नहीं कहते and he said to go and take his seat.
When he settled down on his seat and he was comfortable, he noticed that M. Hamel has worn his best embroidered dress, जिस ड्रेस को वो यूजुअली इंस्पेक्शन डेज पे या फिर किसी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे पहना करते थे. एंड द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम, जो कि हमेशा खाली रहा करते थे, वहाँ आज विलेज के जो सीनियर ओल्ड लोग थे वो बैठे थे. M. Hamel then told them that the Prussians had ordered the school in the district of Alsace and Lorraine to teach German instead of French. उस वक्त फ्रांस को रियलाइज़ होता है शायद Mr. M. Hamel has worn this embroidered dress in honor of his last lesson, और इसीलिए जो विलेजर्स हैं आज उनकी लास्ट लेसन को अटेंड करने आए हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट for their French teacher who had been teaching there for 40 years. Then M. Hamel calls out Franz to recite the topic of participles. Surprisingly, he was now eager to study and wanted to recite the topic in one go without any mistake to please his teacher. As he did not know the lesson, he got confused and stood quietly. He was really feeling ashamed of himself and could not face his teacher. हेमल फ्रांस को डांटते नहीं हैं क्योंकि फ्रांस को अपनी गलती का अब एहसास हो गया था. एवरी डे फ्रांस टोल्ड himself that he would study the next day, and now the opportunity to study had ended and he knew nothing. And he develops suddenly an inclination towards learning, and his French teacher also. और वो पहले कभी अपने मदर टंग को पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था जितना वो आज हो गया था. Then the villagers were also there to pay respect to M. Hamel and were also repenting for not studying in their childhood. वो भी आज repent कर रहे थे कि उन्होंने अपने childhood में कभी भी पढ़ाई नहीं की है. M. Hamel कहते हैं all the people of Alsace and Lorraine were to be blamed as they were not serious towards learning their own language. फ्रांस के पेरेंट्स करना चाहिए because they were not interested in getting him educated, and the teacher himself was to be blamed as he would often send them to water the plants and would declare a holiday and go for fishing. Hamel then praises their mother tongue French. उसको फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज करते हुए आगे कहते हैं इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. He also tells them to guard their language as it is the only way to free oneself from the prison of slavery. The teacher took a lesson in grammar, then they had a lesson in writing. After writing tasks, there was a lesson of history followed by phonetics. Everyone was emotional that day. Even the senior village men were crying, their voice was trembling. Then the clock at the church struck 12 and the prayer song began. M. Hamel's face became dull and colorless as the time had come for the class to get over. The teacher then wrote Viva la France on the blackboard, which means long live France, because he could not he tried to speak but could not continue because of his overpowering emotions. इसीलिए वो ब्लैक बोर्ड में जितना बड़ा हो सकता उतना बड़ा वो विवा ला फ्रांस लिखते हैं जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव France. Then he stopped writing, bending towards the wall, and without speaking anything, signaled the class to leave as the class was over. So that was the end of this story. Hope it was easy to understand. If you have any query, you can comment below. And if you like the video, please give a thumbs up, share, comment, and subscribe to my channel. And also press the bell icon to get the latest notification. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye. Jai Hind.